Let us take our discussion further of economics of ideas. So if you remember economics of ideas, we talked about it, ideas being non-rivalrous. We give a few examples of that. And now let us talk about whether ideas are excludable or not. Do you know that there are few goods which are excludable? Say, for example, you buy anything, and if you buy it, then I cannot use it, right? So that is an excludability thing. And if the goods are excludable, then the person who has produced this good will be getting the benefit of selling this particular good. But if the good is not excludable, then there is a problem because there will be the spillover, right, of the benefits. So क्योंकि मैंने ये गुड प्रोड्यूस करा लेकिन मैं एक्सक्लूड नहीं कर सकता, तो जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ मुझे ही एक्रू नहीं होंगे, वो औरों को भी स्पिल ओवर हो जाएंगे. तो पहली बात लिखेंगे, गुड्स that are excludable allow producers to capture the benefits they produce. Right. In contrast, there are goods which are non-excludable. Now, there the benefits are going to be spilled over, right? Whereas, while the goods that are non-excludable involve substantial spillovers of benefits that are not captured by producers. मैंने गुड तो प्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा गुड प्रोड्यूस करा है कि मैं एक्सक्लूड नहीं कर सकता हूं लोगों को उसको यूज करने के लिए से, तो जो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ मुझे ही एक्रू नहीं हो जाएंगे, राइट. अब जैसे कुछ गुड्स हो सकते हैं जैसे कि बेसिक R&D है या फिर नेशनल डिफेंस है. सो एंड ये सारे के सारे गुड्स गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, एक्सक्लूड नहीं करा जा सकता इसमें किसी को. नोबडी कुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम देम. अच्छा, एक बात है, यहां पे भी दो तरह की बात आती है. अब जैसे स्पिलओवर के बारे में बात आई है, तो एक होता है पॉजिटिव स्पिलओवर और एक होता है नेगेटिव स्पिलओवर.
पॉजिटिव स्पिल ओवर होते हैं जैसे कि नेशनल डिफेंस है, R&D है, ये अच्छी चीजें हैं। द द पॉइंट इज ये मार्केट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे। मार्केट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे बेटा। सो आप ये सोचें कि कोई जना मिल जाएगा वो कंट्री को डिफेंड करने के लिए पैसा लगाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अंडर प्रोड्यूस्ड होगा ये मार्केट के द्वारा, दिस विल बी अंडर प्रोड्यूस्ड बाय द मार्केट। लेकिन दूसरे ही हाथ पे नेगेटिव स्पिल ओवर जैसी चीजें होती हैं। नेगेटिव स्पिल ओवर की चीजें होती हैं जहां पे मार्केट ओवर प्रोड्यूस करता है। आपने कोई चीज बना दी, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं, उसके नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं, तो मार्केट उसको ओवर प्रोड्यूस करने लग जाता है, राइट। जैसे कि मेन बात जो मुझे यहां पे लिखनी है, दीज आर अंडर प्रोड्यूस्ड। अंडर प्रोड्यूस्ड बाय मार्केट्स। These things are overproduced by market. Overproduced by market. Hmm. Hmm. अब जो दूसरी बात आती है यहां पर यह है, आपने कोई ऐसा गुड प्रोड्यूस करा जो कि राइवलरस है, आप उसको एक ही बार प्रोड्यूस करते हैं। आपने कोई ऐसा गुड प्रोड्यूस करा जो कि नॉन राइवलरस है, मतलब सॉरी, जो राइवलरस गुड है आप उसको आपको वो हर बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन जो नॉन राइवलरस गुड है उसको एक ही बार प्रोड्यूस करना होता है, राइट। जैसे कि आइडियाज नॉन राइवलरस गुड है, वो एक बार प्रोड्यूस हो गए तो वो सबके पास पहुंच गए, एक ही बार प्रोड्यूस हो, वो हर बार नहीं उस आइडिया को प्रोड्यूस करना है। गुड्स दैट आर राइवलरस must be produced each time they are sold. Goods that are non-rivalrous need be produced only once. Right. They need to be produced only once. हाँ, देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं जोन्स, वो कहते हैं आईफोन है, उसमें कोई ऐप है, उस ऐप को प्रोड्यूस करने के लिए शुरू में कॉस्ट लगेगी पहला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ। लेकिन जो जो दूसरे यूनिट्स आएंगे उस आइडिया की वजह से, वो सीधे सीधे तौर पे जो पहला यूनिट है उसकी कॉपी, राइट। सो आपको बार बार आइडिया को नहीं प्रोड्यूस करना। सो जो भी नॉन राइवलरस गुड होते हैं उनका वो एक बार प्रोड्यूस होते हैं इस तरह से। सो उन्होंने एक बात और लिखी है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है नॉन राइवलरस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सच एज आइडियाज, दैट इज नॉन राइवलरस गुड
such as ideas involve fixed cost of production and zero marginal cost, right? And zero marginal cost. लेकिन आप एक बात समझ रहे हैं यहाँ पे ये है कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज है दैट इज वेरी टाइटली लिंक्ड टू द इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वेरी टाइटली लिंक्ड टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सो आपने एक बार उस चीज को प्रोड्यूस कर लिया है, अब जो उसके सब्सिक्वेंट यूनिट्स है वो ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। मैं बताता हूं कि किस तरीके से इट इज टाइटली लिंक्ड टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं बेटा। द इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज is tied to the presence of increasing returns to scale and imperfect competition and imperfect competition। सी, जो आइडियाज हैं पहली बार में उस आइडिया को प्रोड्यूस करने के लिए एक फिक्स कॉस्ट लगेगी बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि अगर आप ये सोचें कि HIV वैक्सीन डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट लग रही है, लेकिन जैसे ही वो वैक्सीन डेवलप हो जाएगी उसके सब्सिक्वेंट यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, हार्डली एनी कॉस्ट। आई एम नॉट सेइंग कोई कॉस्ट लगेगी, हार्डली एनी कॉस्ट लगेगी। सो जो पहली पिल है, जो पहली वैक्सीन है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत हाई फिक्स कॉस्ट है, बट जो सब्सिक्वेंट पिल्स हैं, सब्सिक्वेंट वैक्सीन है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए ऑलमोस्ट जीरो मार्जिनल कॉस्ट है या फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। बहुत ही सुंदर बात। से आइडिया अंडरलाइन HIV vaccine whenever it is developed requires a one-time huge research cost। Once it is developed, each unit of vaccine is produced with zero marginal cost or constant returns to scale। With constant returns to scale, right? ये बात कही गई। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, टेक्स्ट के अंदर आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि y इज इक्वल टू fx 100 into
x minus f. F is the fixed cost of production, right? And right. And so what you have is F is, I mean, you can also say that this is like the research cost of the vaccine. Which is like research cost of vaccine. Okay. So maybe, I mean, and he says this, that maybe you require 10,000 hours. Research cost is, let's say, in terms of the research hours you have to put in. So maybe 10,000 hours of research you have to put in to develop one vaccine of HIV. But after the first unit of vaccine is developed, then additional copies, they can be produced very cheaply. Additional units can produce very cheaply. So you can say like this. And if you look at this production function, then this production function, it exhibits the constant, increasing returns to scale also. So you write it like 100x minus 100f. So 1 unit of labor X is the labor, right? 1 unit of labor can produce 100 units of vaccines. Once it is developed. So for the first unit, it is very, very huge, that cost. But after that, it is very small. So that is the point. I have this curve with me. Y is equal to 100x minus 100f, right? And I can write this as 100x is equal to y plus 100f. Now, supposedly for 1 unit of y, for the first unit, in order to produce 1 unit, how much of x is required? So these many labor hours are required to produce even 1 unit of f. But I mean, 1 upon 100 is very, very small. So I can just ignore this 1 upon 100. So the point which you want to make is that in order to produce even 1 unit of the first unit, you require at least, so this is the input x. It is going to be like this. And this is what your unit of y is. I don't think it should come as a surprise to you. So in order to produce even 1 unit of y, you need approximately f units of the labor hour, right? You need approximately these much units of labor hour. And then it is fine. This is just the production function. This is just the production function out here. Now, one thing you also have to understand is that this kind of production function, if you again have a look at it clearly, so my y is equal to 100x minus f, right? And here, this is there. So if I increase x by lambda, if I increase x by lambda, so I can easily see, right, that this, you tell beta, is this not greater than lambda into fx?
what I'm trying to say is that f of lambda x is greater than lambda fx. You can see this. Can you convince yourself of this? So if you just open this up, this will become what? Your 100 lambda x minus f. So that is what? 100 lambda x minus 100 lambda f. Now you tell. This thing is what? 100 lambda x minus 100 f. Now here it is 100 lambda f. 100 lambda f. So, and lambda is greater than 1. So this is going to be smaller than this particular thing. So, and if this thing is holding f of lambda x greater than lambda fx, then this is the case of increasing returns to scale. Then this is the case of increasing returns to scale. You with me? Okay. Acha, other thing which you will have to understand also is if you just look at the way the things are, so you have units produced, and here you have the costs. Here you have costs. In order to produce the first unit also, I have to incur a cost F, no? And then, of course, my cost is falling over the time. My cost is falling over the time. Average cost is falling. So this is AC. But at the same time, my marginal cost is constant. Marginal cost is constant. Now you think, you might say, this is inefficient in the sense that efficiency means what? You should be setting price equal to marginal cost. But here, if I'm going to set price equal to marginal cost, no research firm will ever put any investment in research. You have to understand that. So please write this. Efficiency requires P equals to MC. P equals to MC. Then if research firm is forced for marginal cost pricing, will result in negative profits. नहीं होगा बेटा. Because for the first unit, your AC is this much. And your profits are what? Price minus AC into whatever output you're producing. Okay, let's say output, right? Here in this case, it is Y. Now, if I'm going to set price equal to MC, then because MC is less than AC, my profits are going to be negative, beta. Why will any research firm be investing in R&D then? If I'm going to force them, no, you will have initially all the negative profits. Arey bhai, kya? They will not be incentivized to innovate
to put funds for research? They won't. So as you're producing more and more output, the average cost is going to fall. That is fine. So with increasing returns to scale, average cost is always greater than the marginal cost. And the marginal cost pricing is going to result in negative profits. So no firm is going to enter the market if it is going to be forced for the marginal cost pricing. You with me? So please write this point. With increasing returns to scale, average cost is always greater than the marginal cost. And therefore, MC pricing will result in negative profits. Will result in negative profits. So firms are going to enter if they are allowed to charge a price which is greater than the marginal cost, because that will help them to recover the very, very high fixed cost of the initial units. So the production of new goods, the production of new ideas, it will require the possibility of earning profits. So I will be incentivized to think about the new ways, to have an idea only if I can earn profit. If I cannot earn profit, why will I be incentivized to invest in ideas? Why will I want to innovate? I won't be, right? So therefore, this is necessary that you get away from perfect competition. This is a beautiful line which he has written. So the production of new goods new ideas requires the possibility of earning profits, and therefore necessitates a move away from perfect competition. So perfect competition required was efficient pricing. What is efficient pricing? P equal to MC. But if you're going to force these research firms to charge us P equal to MC, भैया वो पैसा नहीं कमा पाएंगी. जो इतना ज्यादा पैसा उन्होंने फिक्स कॉस्ट की तरह से लगाया है रिसर्च पे पहला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, वो कहां से निकालेंगे वो पैसा? कहेंगे हम कुछ नहीं इनोवेट वगैरह कर रहे, हम कोई नया आइडिया नहीं लेके आ रहे. Necessitates a move away from perfect competition. हाँ जी बेटा, right? चलिए, I'll stop out here. We'll meet in the next class. Thank you.